Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari film Bajrangi Bhaijaan yang kemarin. Sebelum Anda menonton video ini, ada baiknya Anda menonton part 1-nya agar ceritanya nyambung. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar berkembang. Oke, langsung saja. अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़कर ही आएंगे। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना वीजा है। रोज ऐसी बातें मत करो पवन। न पासपोर्ट न वीजा। हमारे दिल में राम बसते हैं, नहीं कोई पहचान, लेकिन बजरंग बली की तरह जय श्री राम। Bajrangi akhirnya memutuskan menyeberang ke Pakistan, membawa Sahida bertemu dengan keluarganya. है तो चल, नहीं है तो चल तवन चल। Di dalam perjalanan, di gurun pasir, Bajrangi bertemu dengan Boali yang membawanya menyeberang ke perbatasan Pakistan dengan melewati terowongan. तारों के नीचे 4 सुरंग हैं, 4 10 वेलकम टू पाकिस्तान। Bajrangi yang merupakan penganut Bajrang Bali yang selalu jujur, dia tidak ingin kabur begitu saja. Sehingga dia meminta izin kepada anggota militer yang bertugas. मुन्नी परमिशन लेकर ही जाएंगे। हिंदुस्तानी है। हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम कोई काम चोरी छुपे नहीं, लेकिन मुन्नी पाकिस्तानी बेचारी अपने माँ बाप से भी छुपी। Namun, Bajrangi beberapa kali tidak diizinkan. Dia terus dianiaya oleh anggota militer tersebut. तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, पर इस दूभी में तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। Tetapi, dia terus mencoba dan akhirnya dia pun diizinkan masuk ke Pakistan oleh petugas militer tersebut. जय श्री राम। देख, तेरे माँ बाप तुझे ठाई से मिल जाएंगे। ढूंढो इसके बैग में, बैग चेक कर। देखो, ये लो। Lalu, setibanya di sebuah daerah, Bajrangi pun dianggap mata-mata India, sehingga polisi Pakistan menangkapnya. Kejadian itu diliput oleh Chan Nawab, seorang reporter yang sedang berusaha mencari berita. कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा। मुन्नी तो मैंने। चलो यहाँ से जाओ। Bajrangi lalu menjelaskan kepada polisi bahwa daerah tempat tinggal Muni berada di tempat tersebut, sambil menunjuk ke kalender. Polisi yang tidak percaya menghampiri Muni sambil memegang mulutnya, sehingga membuat Bajrangi marah. Dia pun memukuli polisi, lalu kabur. शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो। रे जल्दी। Di dalam bus, Bajrangi menjelaskan kepada kenek bus tersebut bahwa dia ingin mengantarkan Muni bertemu dengan keluarganya dan menanyakan lokasi daerah yang ada di kalender itu. Dan saat itu, Chan Nawab mengikuti Bajrangi. Dia menyadari bahwa Bajrangi bermaksud baik dan bukan mata-mata India. बजरंग बली मदद करेंगे ना? पाकिस्तान में Chan Nawab membantu Bajrangi menjauhi kejaran polisi. आज रात आप इस जगह महफूज रहेंगे। Bajrangi dan Chan Nawab pun bersembunyi di sebuah masjid. Mereka pun bertemu dengan ustadz di masjid tersebut. Lalu, ustadz itu membantu Bajrangi dengan menanyakan kepada santriwan-santriwati di sana tempat yang ada di kalender tersebut. जी ये तो स्विट्जरलैंड है। Tidak lama kemudian, polisi pun datang untuk menanyakan apakah ustadz pernah melihat seorang pemuda dan anak kecil bisu. मुन्नी के माँ बाप से मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा। Lalu, ustadz itu menolong Bajrangi kabur dari masjid tersebut dengan mengenakan baju cadar atau syar'i kepada mereka berdua. जय श्री राम। Singkat cerita, mereka pun tiba di daerah Hazrat Amin Shah Dargah. Daerah ini dipercaya bisa mempersatukan orang yang terpisah. का नाम है बजरंगी। मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी Di tempat itu, Chan Nawab melakukan liputan
untuk disebarkan ke YouTube, sehingga Chan Nawab berharap akan ada pihak TV yang menghubunginya. अब तो हम निकल के गोजरा के लिए। Dan malam harinya, ketika sedang berada di kedai kopi, Bajrangi dan Muni melihat rekaman Chan Nawab. Dan saat itu, Muni melihat ibunya yang baru turun dari bis, yang tertangkap kamera Chan Nawab. Keesokan harinya, dia mencari bus yang ditumpangi oleh ibunya tadi. Dan mereka pun bahagia, karena sudah mengetahui desa Muni ini. जिला सुल्तानपुर तेरा गांव ले गया Di dalam perjalanan, polisi pun menggeledah setiap bis yang ada di jalan. Bajrangi pun kabur, dan Chan Nawab berhasil membawa Muni kembali kepada keluarganya. Sementara saat itu Bajrangi pun tertangkap. Dia mengalami luka tembak di dada. मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची की इस कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि रंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्चे का फोन नंबर हमारी इस वेबसाइट पर डाल दीजिएगा, हम आपको जरूर फोन करेंगे। Bajrangi yang berada di tahanan disiksa oleh polisi karena tidak mengaku sebagai mata-mata. Kapoldanya pun menyuruh anak buahnya mengatakan ke media bahwa dia sudah mengaku sebagai mata-mata. जनाब कुरुक्षेत्र पुलिस स्टेशन और दिल्ली में हमारी हाई कमांड। Komisaris polisi pun menyadari bahwa Bajrangi ini memang orang baik. आपका काम है उसे कबूल करवाना कि वो जासूस है। लेकिन जनाब तो ये हमारे मुल्क की शान के खिलाफ होगा। Komisaris polisi ini pun menelpon Chan Nawab dan meminta melakukan orasi ke media untuk menyampaikan kepada warga Pakistan dan India supaya berkumpul ke pos perbatasan Narowal untuk memastikan tidak akan ada yang menghentikan Bajrangi menyeberangi perbatasan. हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इंसानी नजरों से एक मोहब्बत भरे दिल से नहीं, बजरंगी ने ये सब अपने सच्चे और अच्छे दिल से किया। और आज इस नफरत ने बजरंगी खुदा का ये बंदा भी दो मुल्कों की नफरत के बीच फंसकर एक साथ नरोवल चेक पोस्ट की तरफ बढ़े। तो चलिए हम सब मिलकर इस नफरत को खत्म करते हैं। मेरे बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से न रोक पाए। Keesokan harinya, di perbatasan Narowal, ribuan orang telah berada di perbatasan. Bajrangi pun tiba, dan Chan Nawab memberitahu bahwa nama Muni itu Sahida. मुन्नी अब शायद है शायद हाँ। Lalu Bajrangi dibantu oleh warga Pakistan menghancurkan gerbang perbatasan. Saat Bajrangi berjalan menuju kawasan India, Sahida yang tidak bisa berbicara berusaha memanggil Bajrangi. Hingga akhirnya dia mengeluarkan suara memanggil nama. Sehingga membuat Bajrangi menoleh dan menghampiri Sahida, lalu memeluknya.
Nah, itulah alur cerita dari film Bajrangi Bhaijaan ini. Semoga Anda semua terhibur. Jika tidak, pura-pura terhibur saja. Oke? Dan sebelum itu, terus dukung channel ini supaya channel ini berkembang dengan subscribe-nya. Dan apabila ada kritikan, mohon tulis di komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Mwah.